we start. So today's topic is Django. So now, what is Django? The first question is, what is Django? Okay, so the answer is Django is nothing but a Python web framework. Okay, Python web framework. So simply, guys, हम लोग simple इतना बोल सकते हैं कि web framework. Web in the sense it is just maybe it is just used to develop like websites. 1 minute. Okay, so web framework in the sense it is just used to create a website. But what is the meaning of framework? अगर कहीं पे भी वेब का नाम आता है तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि वो वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होता होगा. एंड पाइथन इन द सेंस व्हाट, यहाँ पे पाइथन का कोड यूज होगा वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? तो इसीलिए मैंने पहले सर्च किया व्हाट इज अ वेब फ्रेमवर्क. सो गाइस, वेब फ्रेमवर्क इन द सेंस व्हाट, आपको जो बॉयलर प्लेट टास्क थे, तो टीडीएस टास्क है जो हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे वेबसाइट डेवलप करने के लिए. जैसे कि मुझे अगर मान लो कोई भी वेबसाइट की बात करें, तो लाइक मैं एक सिंपल सा वेबसाइट आपको बताता हूँ. लाइक लेट मी जस्ट से दैट gtu.ac.in. ओके, अदरवाइज ये अभी हमने एक वेबसाइट डेवलप किया था सूर्या IMAX करके. ओके, सो जस्ट चेक दिस थिंग. जैसे मान लीजिए जीटीयू का वेबसाइट है, देन वी हैव सम फोटोज ओवर हियर और वी हैव सम गाइडलाइंस ओवर हियर, और कुछ यहाँ पे कैटेगरीज है, नीचे कुछ वीडियोस है, कुछ इनका सर का कुछ मतलब वहाँ स्पीच है, अदरवाइज उनका कुछ मतलब लाइक वहाँ पे एक नोट डाउन था, मतलब कुछ भी एक उन्होंने प्रेस नोट जैसा कुछ लिखा हुआ है. तो समथिंग लाइक दैट. अदरवाइज उन्होंने कुछ तो वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है अपने कैरियर के बारे में, अदरवाइज अबाउट जीटीयू एंड व्हाटएवर इट इज. तो ये काफी कुछ चीजें मुझे यहाँ पे दी गई है. तो गाइस, काफी लोग कैसे करते हैं इसको डिजाइन करने के लिए, सब कुछ पहले से स्टैटिक रखते हैं. स्टैटिक इन द सेंस HTML के अंदर ये लिख देंगे. नाउ इन फ्यूचर इफ दे वांट टू चेंज इन द सेंस व्हाट, कि अगर मान लो उसको मुझे मॉडिफाई करना है, जैसे ये सूर्या IMAX की बात करूं मैं, सो वी हैव सम इमेजेस ओवर दैट. ओके, नाउ इफ दैट गाय वांट टू जस्ट चेंज द इमेज ऑन द स्लाइडर, जैसे उसको यहाँ पे कोई इमेज चेंज करना है, देन व्हाट द गाय हैज टू डू, वो सीधा एक्चुअली कांटेक्ट करेगा एडमिन को. 1 minute. ओके, वो एडमिन को कांटेक्ट करेगा और एडमिन को कांटेक्ट करके बोलेगा सर ये इमेजेस अपलोड करो. एडमिन इन द सेंस मान लो, ऐसा मान के चलो कि वेबसाइट डेवलपर जो था, जैसे कि हमने वेबसाइट डेवलप की, देन दैट गाय विल कांटेक्ट अस कि सर ये इमेज अपलोड करके दो. तो नाउ कंसीडर, अगर एज ए कंपनी मैंने ऐसे 500 वेबसाइट्स डेवलप कर चुका अब तक, तो इन सबके इमेजेस अपलोड करने में मेरा टाइम जाएगा. तो व्हाट आई विल डू, मैं उनको एक एडमिन पैनल प्रोवाइड करूंगा जहां पे वो आईडी पासवर्ड पुट करके खुद से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं. बट द थिंग इज दैट गाय इज नॉट एन एक्चुअली डेवलपर. वो बंदा खुद एक डेवलपर नहीं है, तो उसको कोड लिखना नहीं आता. तो मुझे उनको एक यूआई बना के देना पड़ेगा कि यहाँ पे आप सिर्फ अपना इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट ओवर हियर. ओके, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो इन द सेम वे एक्चुअली उनको अपना एड्रेस चेंज करना है. जैसे मान के चलिए यहाँ पे उनका कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, अदरवाइज एड्रेस उनका कुछ चेंज करना है, या फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा, इनको यूट्यूब या जो भी उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया उनका लिंक चेंज करना है, समथिंग लाइक दैट. तो उनको लाइक डेवलपर की जरूरत ना पड़े, तो मुझे ऐसा कुछ करना है. ओके, सो मुझे इस तरीके से कुछ करना था. सो व्हाट वी कैन डू, उसके लिए हम एडमिन पैनल बना के देते हैं. सो एडमिन पैनल बनाया, अगर मान लो अब किसी बंदे ने उस वेबसाइट को हैक कर दिया बाय यूजिंग द एसक्यूएल इंजेक्शन और CSS और व्हाटएवर. तो अगर किसी बंदे ने CSS इन द सेंस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ओके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अगर किसी ने उसको हैक किया, दैट मींस व्हाट, नाउ दैट गाय कैन अपलोड एनीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट. तो मुझे क्या करना चाहिए, जब मैं एडमिन पैनल डेवलप करूं, देन आई रिक्वायर्ड सम सिक्योरिटी आई हैव टू मैनेज. प्लस मुझे कोई डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट को. ओके, क्योंकि डेटा तो स्टोर करना ही है. सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर आवर वेब एप्लीकेशन विद द डेटाबेस. वी हैव टू मैनेज द सिक्योरिटी. ओके, एंड जब मुझे एक्चुअली एडमिन पैनल बनाना है, देन एज पर द डेटाबेस, एज पर द okay, so
लाइक कहाँ थे हम लोग? ओके, जब मैं एडमिन पैनल बनाना चाहता हूँ देन आई रिक्वायर्ड सम फॉर्म्स एज पर द डेटाबेस. मान लो मैंने एक्चुअली कॉन्टेक्ट फॉर्म डेवलप किया, अदरवाइज मैंने यूट्यूब के लिंक शेयर करने के लिए फॉर्म डेवलप किया. ऐसा जो भी मेरे पास डेटाबेस में टेबल थे उसके हिसाब से मुझे फॉर्म डेवलप करना है. तो ये सब बॉयलर प्लेट टास्क है. बॉयलर प्लेट इन द सेंस रिपीटेड टास्क है. आज मैंने एक बंदे के लिए डेवलप किया, कल दूसरे बंदे के लिए एडमिन पैनल बनाऊं तो वहां भी मुझे सिक्योरिटी कंसर्न होंगे, सिक्योरिटी के लिए कोड लिखना पड़ेगा, और वहां पे भी मुझे एक्चुअली ये सब फॉर्म्स डेवलप करने पड़ेंगे. सो गाइस, फ्रेमवर्क इन द सेंस व्हाट? फ्रेमवर्क इन द सेंस दे हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स. Module in the sense libraries, they have some libraries to develop, to otherwise to just perform this boilerplate task. So what is the meaning of framework? A framework is a collection of packages or modules which allows developer to write the web application or services without having to handle the low level details like in protocols or sockets or thread management. Okay, thread management in the sense if more than one request is will appear, then what to do with that request, मतलब किसको प्रायोरिटी दे, ओके, और कौन से थ्रेड को कब हम लोग को स्टॉप करना है. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय दैट. मतलब लो लेवल की बात है. अगर आप अपर लेवल पे मैनेज करना चाहते हो या एक्स्ट्रा कुछ थ्रेड्स ऐड करना चाहते हो देन दैट्स अलाउड. ओके, बट ये सब चीजें, बट डीजेंगो उसमें भी थोड़ा सुपीरियर है. वो आपको सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा थिंग भी प्रोवाइड करता है जो हम लोग लिस्ट आउट कर रहे हैं अभी. सो आई होप आप लोग को पता चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क. सो फ्रेमवर्क इन द सेंस व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? Framework in the sense it provides some more facilities, it provides some more libraries, it provides. Okay, so now with Django you can take a web application from concept to launch in a matter of hours. So अगर आप अपना web application develop करना चाहते हो, it's quite faster to for the development. Okay, from the development perspective or from the development approach it is quite faster because काफी सारी चीजें हम लोग को provide कर रहा है. So now guys, it provides actually, first of all, that's quite fast. It's a fully loaded. These are the actually like properties of the, otherwise advantages of the Django framework. Okay, it assure for the security. Okay, it's quite scalable. Okay, and increase the versatile. So in short, these are the actually main advantages of the Django framework. Okay, so what is Django? It's a web application framework for the Python. Otherwise, it's a Python web application framework. So what's the Python web application framework? That means what? It is just used to create the websites. It is just used to create the web applications. And framework in the sense what? It has lots of facilities. It has lots of packages or modules it has. Okay. So आपको ये सब benefits मिलने वाले. The first one, it is quite fast. In short, Django was designed to help the developers, not the clients. मतलब मुझे development side speed चाहिए था. To help the developers take applications from the concept or to completion as quickly as possible. देखो, from the concept in the sense from the scratch. Okay, जैसे मान लो मेरा कुछ आइडिया था कि I want to develop this type of websites. So from that to the completion, it's like quite helpful. Okay, काफी सारे modules actually predefined है. Okay, काफी सारी चीजें predefined. And एक बार इसका flow समझ में आ गया, हाँ starting में थोड़ा typical है. Okay, एक दो बार अगर इसका आपने practice किया, एक दो project बना दिए and उसका flow समझ में आया, then guys अब next application या next website बनाओगे then it's quite faster. Okay, now another thing is fully loaded. In short, it has lots of predefined modules actually. जैसे कि हर एक वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन चाहिए. ऑथेंटिकेशन इन द सेंस लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद ही मुझे यूजर को होम पेज पे लेके जाना है. सो हर एक वेबसाइट में चाहिए, मतलब हर एक इन द सेंस 99% वेबसाइट्स में हम लोग को लॉगिन मॉड्यूल चाहिए. सो इट प्रोवाइड्स दैट लॉगिन मॉड्यूल्स. यू हैव नॉट टू वरी अबाउट दैट. आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इट प्रोवाइड्स द लॉगिन मॉड्यूल. इन द सेम वे इट प्रोवाइड्स द कंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब एडमिन साइट भी बना के देता है. जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे यू विल गेट दैट साइट, site maps, RSS feeds, and many more tasks. Okay, so Django includes dozen of extras you can use to handle the common web development tasks. Okay, तो काफी सारी चीजें हम लोग को प्री डिफाइन दे रहा है. जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे, हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, यू विल गेट द आइडिया. नाउ इट्स क्वाइट सिक्योर. इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिन पैनल के लिए हम लोग को काफी सारी सिक्योरिटी की जरूरत है. जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, कोई बंदा इंजेक्ट कर सकता है. हम लोगों ने एक्चुअल अपने MySQL के साथ जब पाइथन को कनेक्ट किया था तब हम लोगों ने डेटाबेस को हैक करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई किया था. अगर आपको याद हो तो लाइक ऐसा कुछ था कि पहले मैसेज आया था एंटर यूजर नेम. ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ मैसेज एंटर पासवर्ड. तो यूजर नेम के लिए हम लोगों ने मान लो लिखा हर्ष एंड पासवर्ड इज एक्चुअली ABCD. तो जनरली यूजर ऐसा कुछ लिखता है, यूजर नेम इज लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐसे एंटर करता है. बट व्हाट वी डिड, हम लोगों ने इसकी जगह क्या किया था कि जब हम लोग को पूछा गया कि एंटर द यूजर नेम, देन वी जस्ट राइट डाउन लाइक दिस
like Harsh single dash then or 1 equal to whatever 0, that's it, हमने ऐसा कुछ लिखा था. ओके एंड पासवर्ड हम लोग को पता नहीं था तो पासवर्ड की जगह हमने लिख दिया था कुछ भी. सो व्हाट विल हैपन, अगर आपने प्रॉपरली कुछ कोड नहीं लिखा, एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब अगर आपने डायरेक्टली क्वेरी लिख दी थी एंड क्वेरी के अंदर इस वैल्यू को पुट कर रहे हो, then using the if you know the username only you can directly log in that particular system. पासवर्ड की जरूरत नहीं है. so that is the hacking. okay so अगर आप SQL injection जानते हो then you can enter in like lots of in many websites, because अगर उन्होंने मैनेज नहीं किया सिक्योरिटी तो आप लॉगिन को बाईपास कर सकते हो. इन शॉर्ट विदाउट पासवर्ड यू कैन जस्ट एंटर इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम. okay without password you can just enter in that particular system. so SQL injection generally manage करना अभी जरूरी है because like it's quite famous hacking trick. so almost सभी बंदे पहले तो यही अप्लाई करते कोई भी वेबसाइट पे. after that cross site scripting or cross site request forgery or click hijacking, okay click jacking, ये सब hacking techniques है. so generally ये normal hacking techniques है या famous hacking techniques है जो हर एक वेबसाइट पे हैकर पहले अप्लाई करता है. so as a developer मुझे अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना है, then I have to write down the code to prevent my website from this type of attacks. okay तो मुझे सिक्योरिटी के लिए सब कुछ लिखना पड़ेगा हर एक वेबसाइट में. so that's not a good idea कि हर एक वेबसाइट पे मैं इतना लिखूं. so what Django will provide, it actually provide a security assurance. that means what, इतनी सारी चीजें वो खुद से सिक्योर करके देता है. मतलब अगर आपने Django फ्रेमवर्क का यूज करके वेबसाइट डेवलप किया, then you have not to worry about all this type of things. now extremely scalable. in short if you want to develop the small website or if you want to develop the large website, then like Django is quite useful. okay वो दोनों जगह पे वर्क कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. इन शॉर्ट okay in short अगर आपका heaviest ट्रैफिक है then still it will manage, you have not to worry about that. okay now ये कहाँ पे यूज हो सकता है? so maybe you can use in a company or organization or government, like in a government body you can just use it anywhere. मतलब कोई भी टाइप की वेबसाइट के लिए यूज हो सकता है. so that's that. These are nothing but in some advantages or some benefits of the Django framework. now the question is, sir, how to use the Django framework? now I am agree itni sare benefits there are, then I want to use the Django framework. so how to use this Django framework? okay so guys, first of all you have to install Django framework in your system. okay so what you have to do, you have to simply write down, अगर कोई भी चीज इंस्टॉल करना है तो हम क्या लिखते हैं, pip install and like मान लो मुझे scipy इंस्टॉल करना था, then pip install scipy. if you want to install numpy, then pip install numpy. if you want to install like pandas, then pip install pandas. okay so whatever you want to install anything, then you have to just write down. if you want to install any module of the Python, then you have to just use command pip install then the module name. so what is the module name actually here? so module name is actually Django. okay so what we have to do, we have to simply write down pip install Django. but primary requirement is there. what is the requirement, sir? Python must be installed. okay अगर Python installed नहीं है तो guys pip नाम का command ही काम नहीं करता, you know that thing. and Django installation के time सबसे पहले Python को check करता है कि Python is installed or not. okay so Python must be installed and after that आप जब web application develop करना चाहते हो, so database में क्या रखोगे? database in the sense, do you want to connect your website with the MySQL or with the Oracle or SQLite? आप किसके साथ connect करना चाहते हो? so if you want to connect your web application, with either of the website, with either of the like database, then the database also must be installed. okay the database must be also installed. so right now हम लोग जो application develop करेंगे, that we will use an SQLite, and SQLite is by default installed with the Python. okay so SQLite is by default installed with the Python, so we have not to worry about that in this case right now. Python includes the lightweight database called the SQLite, so you will not need to set up the database just yet. okay because right now मैं MySQL or Oracle के साथ Django को connect नहीं करना चाहता. okay for this session only. so what we will do, हम लोग actually like right now हम लोग connect भी नहीं करेंगे because वहां तक पहुंचने भी नहीं वाले, ठीक है, इस session में actually. so still in future also we will just use the SQLite, not other databases. but if you want to develop the website and in a backend, if you want to use MySQL or Oracle, if you want to use, then guys you have to install that firstly. okay मतलब पहले उसको configure करें and after that you have to just go with the Django. Django के लिए database की requirement नहीं है, but अगर आप particular website के लिए कोई particular database use करना चाहते हैं तो पहले उसको install करके रखिए. so now let us just install Django. so I have to simply write down pip install Django.
Okay, in my system it is already installed, so you just say, oh sir, required already satisfied. Okay, requirement is already satisfied. But if in your system, if it is not installed, then you have to just write down this command, pip install Django. It will take 4 to 5 minutes to install the Django framework, depends on your network speed. So that's that. Now I want to check is that the Django is installed or not. I want to verify that. Hello. હા સર મેં ડીજેંગો ઇન્સ્ટોલ કર્યું, મારામાં છે ને સેમ એરર આવે છે અત્યારે. सर लेक्चर के बाद वो एरर देखते एक बार एरर फॉरवर्ड कर दीजिएगा. हाँ सर कर दो. ओके एंड गाइस, जैसे ये कुछ सर ने बोला कि मुझे कुछ एरर मिल रही है, so just do one वार्निंग thing. है सर वार्निंग है Okay. वर्जन अपडेट. So version update in the sense sir, okay, so for that actually you have to like, देखो अब क्या होगा आपका, अगर Python 3.6 या like 2 point something है, then Django will not work with that. So there are some basic requirement, version requirement of the Python, like आपको पहले Python का कुछ तो proper version लिखना पड़ेगा. So just do one thing, just आप Python start करिए, सिर्फ Python लिखिए, you will get the version. Actually 3.8.2 is installed in my system. So just check in your system के कौन सा version installed है. Okay, and primary requirement अभी Django के लिए primary requirement है, तो आप लिख सकते हो Django like tutorial. So you will get like, and इसका official website पे हम लोग को जाना है, ठीक है. So like docs.django.project.com, otherwise djangoproject.com, उसकी वेबसाइट पे हम लोग को जाना है, उसकी ट्यूटोरियल्स फॉलो करना है, कोई दूसरी वेबसाइट से हमको काम ही नहीं करना. So अगर मान लो इंस्टॉलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, then just go with this installation Django guide. Okay, उसको ओपन करिए and guys 3 point something of something आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए, Python 3 point something वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए. And still if you have a problem, then here maybe वहां पे कहीं पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट, मतलब प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है. ठीक है, एक बार इसको रीड करना पड़ेगा. यहाँ पे एक्चुअली एक लिंक मिलेगा आपको कि फॉर लाइक इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, देन व्हाट टू डू. ठीक है, दिस आर द वर्जन स्पेसिफिकेशन. ओके, आपका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है सर? कुछ सर कुछ? हाँ सर 3.8.5. देन इट मस्ट वर्क. ओके तो वर्क करना ही चाहिए सर Django. ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसके बाद देखते हैं. और गाइज अगर मान लीजिए आप में से इसमें से कोई भी एक वर्जन इंस्टॉल्ड है, जैसे मान लीजिए लाइक 3.8.5, तो आपका Django ये इंस्टॉल हो गए 3.1. बट मान लीजिए आपका लाइक 3.4 इंस्टॉल्ड है, then you have to just write down Python, sorry, pip install Django double equals to whatever the version you want to specify. इसमें से जो भी चीज आपको इंस्टॉल करनी है. लेटेस्ट वर्जन इज 3.1. ओके, लेटेस्ट वर्जन 3.1 है Django का. Okay, now what is my next requirement? I want to just check if Django is successfully installed in my system or not. So for that, what I will do, I will simply open the command prompt and just write down Python. Okay, just write down the Python. And after that, what is our next requirement? मैं यहाँ पे notify किया हुआ है, मतलब sorry, note down किया हुआ है. Just import the Django module and print the version of Django. Okay, अगर Django module import successfully नहीं हुआ, that means what? Your Django is not installed yet. So just write down import Django. Okay, import Django. Okay, now it just generated the error. मतलब path के साथ वो actually set नहीं हुआ है, जो मेरा Python था उसके साथ उसका path match नहीं हुआ. Okay, so Django ने यहाँ पे problem generate की मुझे. So maybe this type of error it can generate. So उसका मतलब आपको reinstall करना है. Okay, actually मैंने 2 path set किए हुए Python के. So second path में work करना चाहिए. Okay, already हम लोग work कर चुके हैं. So you have to configure that. Actually आपको अपना path देखना है और Django का module देखना है वहाँ पे installed है कि नहीं. अगर आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, then just ping me, मैं वो solve कर दूंगा आपको. So just verify the Django installation by just import the Django and just call this function get version. So it just return the version name. Otherwise अगर आपको यहीं पे error आ रही है, then you have to just reinstall your Django. Otherwise you have to configure the Django. Now that is something about the Django installation. Now finally, if Django is installed, then I want to start the development. So I want to just start a web application development. So guys, now the question is, sir,
जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था सूर्या एमएक्स का, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज देखी थी सूर्या एमएक्स। सो ये जो वेबसाइट था, तो मुझे आपको पता है कि इसका एडमिन पैनल मैंने बना रखा है। सो एडमिन पैनल मतलब जिसको सिर्फ आईडी पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन जस्ट नो, यू जस्ट गेट द आइडिया कि यहाँ पे कहीं पे भी लॉगिन नाम की चीज नहीं है। सो गाइस दिस इज फॉर द क्लाइंट, दिस इज फॉर द क्लाइंट एंड वो सर्वर के लिए डेवलप किया हुआ है। ओके, दिस इज फॉर द क्लाइंट और वो मैंने सर्वर के लिए डेवलप किया हुआ है, मतलब एडमिन के लिए डेवलप किया। इन शॉर्ट एक ही प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास दो वेबसाइट है। सूर्या आईएमएक्स के एक प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास दो वेबसाइट्स है। द फर्स्ट वन इज फॉर द क्लाइंट, अनदर वन इज फॉर द एडमिन। So in short, जब मैं Django framework का यूज करूं, and I will simply say to my Django, oh, I want to develop 4 website, but ये चारों वेबसाइट एक ही कंपनी के लिए है। So guys, first of all, you have to just develop the project, and in that project you have to create 4 or 5 website as per your requirement. Okay, so सबसे पहले कोई भी ऑर्डर आता है तो उसको हम ऐसे ही बोलते हो, that's the project. अब उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज की जरूरत है, maybe it requires 3 websites, maybe it requires 4 website or 5 website or whatever it is. Okay, so first of all, you have to create a project actually. Okay, so how to create a project? So you have to simply write down. So first of all, we have to create a project. So for that, you have to write down a command. Actually, that command is actually django admin, then start project and whatever the project name you want to set. Okay, so django admin start project and whatever the project you want to create. But before that, आप project कहाँ save करना चाहते हैं? प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना चाहता हूँ? आई वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन अ डेस्कटॉप ओनली। ओके, सो मैं कुछ फोल्डर बना दूंगा एंड django प्रोजेक्ट, मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ओके, django प्रोजेक्ट। नाउ लेट आई जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड यहाँ सबसे पहले मुझे डेस्कटॉप पे नेविगेट होना है। सो मैं एक्चुअली अभी ट्रिपल ए पे था। नाउ ट्रिपल ए इज एक्चुअली सिस्टम नेम, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मैंने लॉगिन यूजर का नाम एक्चुअली ट्रिपल है। ओके, मैंने लिखा cd डेस्कटॉप and cd django project। तो मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में नेविगेट हो गया। तो आप अपनी वेबसाइट को, सॉरी नॉट द वेबसाइट, आप अपने प्रोजेक्ट को कहां पे स्टोर करना चाहते हो, तो पहले वो फोल्डर बना दीजिए एंड जस्ट नेविगेट टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर इन अ कमांड प्रॉम्प्ट। नाउ राइट डाउन django admin, आफ्टर दैट स्टार्ट प्रोजेक्ट। बट इफ यू जस्ट फॉरगेट द ऑप्शंस, कि मुझे अभी याद नहीं है कितने ऑप्शंस है, जस्ट राइट डाउन django admin and lots of options are available। देखो इतने सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, सो django admin मैंने सिर्फ लिखा था, इट जस्ट लिस्ट आउट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल विद द django admin। नाउ मुझे उसमें चाहिए एक्चुअली स्टार्ट प्रोजेक्ट। इन शॉर्ट, आई वांट टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो लाइक राइट डाउन django admin start project, django admin start project, and after that name of your project। so now let I just write on my site। okay, so just do this thing, django admin start project and my site। so if you will have some error, then it just display the error और ना बोल देगा कि मैंने ये फोल्डर या प्रोजेक्ट में बना नहीं पाया। that's the thing। now guys, this folder inside your django project folder, this project will be created automatically by this command। okay, तो इसके अंदर कुछ तो बन गया होगा। so let me just open that। oh, one folder was created, and that is nothing but a my site। what is that my site? It's my project name। now let me open that। inside that one folder is there, that is my site, and one file is there, that is manage.py। it's a py file, it's a python file। simply we can say that it's a module, or directly we can run this file also। okay, so let me open this file। oh, it has some command actually। okay, and you guys know that if underscore name and equals to main, then just call the main function। in short, अगर आप इस फाइल को directly run करते हो, then this thing will be executed, then this thing will execute। okay, so like we have not to worry about this actually। so it's a like automated generated file। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब manage.py नाम का फाइल बनेगा। so this is my actual folder django project। inside that, this is my site, that's my project name। inside that we have a my site, that's once again the project name, and one file was created। now just open this folder। oh, we have some more files। so why this much of files are there? so actually अभी तक हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया। so what this got, what's the output? अगर मैंने my site लिखा हुआ है, अगर मेरे प्रोजेक्ट का नाम my site है, then I just got the folder name my site। in that folder I will have manage.py, and one more folder will be there, that is my site। so मेरे पास एक फाइल था manage.py, and one more, that is my site। and inside that some files are there, like underscore init.py,
settings.py, urls.py, asgi, and wsgi. So what about all these files? So guys, like the outer folder, my site, it's the root directory of your project. It's a root directory. Ensure everything will be inside this. It's a container for your project. Okay, it's a root directory, or you can simply say that it's a container. So whatever you want to develop, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं कि मुझे 5 वेबसाइट्स बनाने हैं, so all the websites will be inside this folder. Okay, मान लो मुझे actually SCET college की तरफ से कोई project मिला, so what I will do, I will just write down the command django admin start project and SCET. So that will be my root folder. And SCET ने ऐसा बोला था, sir, we need 2 websites, one for students and one for actually faculties. So I want to develop 2 websites, but both these websites must be created inside that SCET folder. So what about that SCET? It's actually a container of my websites, or I can simply say that it's a project name. Okay. So जो root folder मुझे बना था. But now the question is, sir, आपने ऐसा बोला कि okay, now we have a SCET. You have a SCET folder. Okay, inside that you want to develop 2 websites. The first website we want to develop, that is for faculty, and second one is for the students. Okay, तो SCET के अंदर मेरे पास 2 और folders या कुछ भी ऐसा कुछ बनेगा. One website for the faculty and another website for the students. But right now, guys, for this faculty or for the student, I want some common things. I want some common things. I want, जैसे कि मुझे database बनाना है, तो इन दोनों के लिए common database develop करना है. तो अगर मैंने faculty नाम का जो folder बना या जो website बना उसमें कोई changes किया, then will this reflect on this one? But obviously it will not, because दोनों का location ही अलग है. So what is my requirement? I want some common things I require in all these websites. So what I will do, इसके अंदर मैं एक और folder बनाऊंगा, that is SCET. SCET के अंदर एक और SCET नाम का folder. Why this folder is there? अंदर का जो folder है वो क्यों है? Okay, what about the outer folder? It just represents, oh, this is the project, this is the container. Maybe inside that more than one website will be there. And inside that one folder is there, that is SCET. So that's the common settings for this faculty and students. Okay, so that's the common settings. Okay, इसके अंदर common setting होगा. Now let I just say, मैं database की simply आपको बात करूँ. Okay, now I want to do, I want to connect my faculty website with the MySQL, as well as I want to connect students website with the MySQL. In short, MySQL is my database. So मुझे MySQL database का पूरा configuration लिखना पड़ेगा कि भाई MySQL में enter होने के लिए यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है. Because in short MySQL के अंदर एक से ज्यादा database हो सकते हैं. So what's the proper database name? Okay, what's the actual database name for this project? तो ये configuration अगर मैं individual लिखूं तो मुझे faculty नाम की website में भी लिखना पड़ेगा और students में भी लिखना पड़ेगा. So what I will do, I will just put that configuration in this folder. In the line number 13 actually. I hope आप लोग को समझ में आया. So SCET के अंदर SCET नाम का folder क्यों था? Because it is for the common settings, like जो हम लोग को हर एक websites के अंदर apply करना है. Okay, so inside this my website, I have one more my website folder. What is the reason for this my website? It is just it will have some common settings जो हम हर एक application, हर एक websites के लिए apply करते हैं. And using this manage.py, I can manage all the websites as well as this folder. So this is the handler, this is the manager, this is the manager code जो आपकी पूरी website को handle करे. बाद में देखते हैं इसको. But what about this outer folder? It's just a container. जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी. The outer my site root directory, it's just a container for your project. Okay, its name doesn't matter. आप इसका नाम कुछ भी रखो, it doesn't matter. Okay, this name will be considered. या अंदर का जो folder का नाम है, this must be your project name. यहाँ इसका नाम आप rename कर सकते हो, doesn't matter. Now what about this manage.py? So it's a command line utility that lets you interact with the Django project in various ways. So in short, it is a manager. So if you want to interact with your project, you have to use this manage.py. In short, if you want to create a first website in your project, you have to use this manage.py. If you want to modify that website, if you want to launch that server, like I want to just start the server, you have to just use this manage.py. In short, manage.py is a manager for your project. Okay, so it's a command line utility, means you have to access, if you want to run that, you have to just use the command prompt. Okay, you have to use the command prompt to just use this manage.py functionality. Now you can read all the details about manage.py. अगर आपको चाहिए, then you can just use django admin and manage.py. But just ignore this line. Just remove this. It doesn't matter. हम लोग आगे use करने वाले हैं. Now what about this inner folder? जो once again my site नाम का folder है, it will have some common functionalities.
जो कॉमन सेटिंग्स है, नॉट द फंक्शनलिटीज, कॉमन सेटिंग्स है पूरी वेबसाइट के लिए, पूरे प्रोजेक्ट के लिए. नाउ इनसाइड दैट द फर्स्ट वन इज init.py. So the inner my site directory is actually a Python package for your project. Its name is the Python package name you will need to use to import anything inside it. So guys, ये जो नाम रखा है यहाँ पे हमने my site. So in future मान लो आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ settings set किए. Okay, and now consider you have 2 or 3 web application inside this project. Project in the sense maybe it has more than one websites. Okay, तो मान लीजिए मेरे पास 2 वेबसाइट्स है इस प्रोजेक्ट के लिए. So इस यहाँ जो कॉमन सेटिंग्स मैंने लिखा था इन फाइल्स के अंदर, वो मुझे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर यूज करना है. देन यू हैव टू यूज दिस पैकेज नेम. सो दिस पैकेज नेम इज इंपॉर्टेंट. ओके, ये जो पैकेज नेम आप यहाँ रखोगे, इन फ्यूचर यू हैव टू यूज दैट. So be careful, यहाँ पे एक मीनिंगफुल नाम रखेगा. So now the first thing is nothing but an init.py. So जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट init in the sense जो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट होता है. So it's an empty file right now that tells the Python this directory should be considered as a Python package. In short ये सब as a library use होने वाला है. Okay, so जो भी आपको Python, देखो 2 चीज थी, Python module and Python package. So Python module is a Python file. Okay, Python file जिसको आप in future as a library use करोगे. What about Python module? Sorry, what about Python package? Python package in short, it's a folder having some Python modules. So these all are the Python modules. But if you want to declare all these as in Python modules, you require init.py. In short, __init__.py file you require in my site folder. So this folder can work as a Python package. This folder can work as a Python package. Is it clear? And one more thing, आप इसके अंदर कुछ settings भी लिख सकते हो. आप इसमें से कौन सी चीज बाहर अलाउ करना चाहते हो, कौन सी चीज को प्राइवेट रखना चाहते हो. Just modify. You can just write down all these things inside the init.py. But right now it's an empty file. So let me check, is it an empty or not? So here I have. Let me open this. So that's the empty file. Okay, बाहर से भी वैसे पता चल ही रहा था, because यहाँ पे 0 KB दिया हुआ है. Okay, the size of this file is 0 KB. So it's an empty file, but it is just used to declare this my site is actually this outer folder, my site, is actually a Python package. So that's that. Now if you are Python beginner, just ignore this thing. Okay, just ignore. Now another thing is settings.py. So आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो भी सेटिंग्स होगा वो आपको यहाँ लिखना है. जैसे कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना, और अगर आप MVC आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, दैट मींस मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. सो इन शॉर्ट आपने डिजाइन पार्ट कहीं और जगह रखा है, इमेजेस आपने कोई और जगह रखा है, ऑडियो वीडियो कोई और जगह पे पुट किया हुआ है. देन आपको सिर्फ बताना है आपकी वेबसाइट को ऑडियो वीडियो के लिए ये फोल्डर है, इमेजेस के लिए ये पर्टिकुलर फोल्डर है, HTML फाइल्स एंड CSS फाइल के लिए ये पर्टिकुलर फोल्डर है. Then each and every settings you have to just mention in the setting.py. Okay, so settings are configuration for the Django project. Now Django settings will let you know all about settings work, how the settings works. So that's the complicated file, but इसमें used to हो जाओगे, काफी बड़ा Python file है. Okay, so like as time goes, like आपको इसको used to हो जाओगे. So I just told you like starting के 2 प्रोजेक्ट थोड़े heavy रहेंगे Django में, बट जैसे आप 3-4 प्रोजेक्ट बनाओगे यू विल बी फेमिलियर. हाँ ठीक है, यही चीज यहाँ पे यूज करनी है. ओके, सो इसके अंदर टोटल सेटिंग्स होगा. दैट्स दैट. सो यूज करते जाएंगे तो क्लियरली पता चलता जाएगा. सो 2 फाइल्स वी कंप्लीटेड, init एंड सेटिंग्स. नाउ आफ्टर दैट urls.py. सो आप जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आप जनरली क्या लिखते हो, लाइक आई वांट टू ओपन गोवर्धन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, सो gisurat.com. I want to open this website. Just guys, just focus on this. मैंने लिखा था gisurat.com और उसके पीछे स्लैश गोवर्धन अपने आप आ गया. Why this slash Govardhan is there? So that's my URL. That is the URL. अब जैसे वेबसाइट लोड होता है और मैं कोई एक चीज पे क्लिक करूं, like let I just open, okay, now I want to just open this courses. So now this is still gisurat.govardhan. Now let I just click on downloads and I want to open this codes. So now just check this. यहाँ पे अब URL चेंज हुआ, gisurat.com/govardhan/code.php, और आप देख सकते हो पेज भी चेंज हो चुका है. ओके, पूरा पेज चेंज हो चुका है. ओके, एंड Django का यहाँ थोड़ा बहुत हम लोगों ने डेटा भी रखा हुआ है. यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. कुछ प्रोग्राम है वहाँ पे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो प्रोग्राम हम यहाँ पे लाइव करेंगे वो तो आपको शेयर करूंगा, पर पुरानी चीजें अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. नाउ गाइस, ये जो URL है, इन शॉर्ट अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आई हैव 10 पेजेस, सो हर एक पेज को कैसे एक्सेस करोगे, तो जो भी आपकी URL है, यू हैव टू डिक्लेयर ऑल दिस URL इनसाइड दिस. अगर आपने यहाँ URL डिक्लेयर नहीं किया, इन शॉर्ट आई हैव 15 पेजेस,
बट आई वांट टू जस्ट अपलोड 10 पेजेस। इन शॉर्ट वेबसाइट पे 15 पेजेस है, बट मुझे लाइव 10 पेजेस ही करने हैं, मतलब यूजर्स के लिए 10 पेजेस ही रखने हैं। सो उस 10 पेज का यूआरएल यहाँ सेट करें। ओके, सो इट कंटेन्स ऑल द यूआरएल्स। ओके, आपकी एप्लीकेशन के लिए जितने भी यूआरएल्स है वो सब के सब आपको यहाँ लिखने हैं। यूआरएल डिक्लेरेशन फॉर दिस Django प्रोजेक्ट। तो डिक्लेरेशन इन द सेंस उतने ही पेजेस यूजर एक्सेस कर सकता है। A table of contents of the Django powered site, you can, okay, just ignore this. URL dispatcher actually हम लोग को रीड करना चाहिए, बट अभी राइट नाउ उसकी जरूरत नहीं है। ओके, एक रेफरेंस में लेना चाहिए। सो URL वाली फाइल ओपन करके देखते हैं। So this is urls.py. So right now I have no URL actually. Only single URL is there, that is admin. We will open that after some time. Okay, जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है, we will open this. So यहाँ पे जितने भी URLs in future आप create करेंगे, you have to just mention all this URL over here. So that is something about the urls.py. Now ASGI and WSGI is not important for us as a beginner. So what you want to do, अगर ASGI का बात करें, then it is an entry point for ASGI compatible web server for your server, your project, to serve your project. In short, if you develop the web application, and now if you want to upload your application on an ASGI compatible web server, then you have to just work with this file. And in the same way, अगर आप WSGI WSGI compatible server पे इसको upload करना चाहते हैं, then just you have to modify this file. Now what is ASGI? So ASGI is actually just consider it's a one type of server. Okay, it's a one type of server. So web server gateway interfaces. Okay, उसके अपने facilities. And in the same way, another one is nothing but in WSGI. So these are nothing but in server types, different facilities they will provide. Right now, just ignore that. हम लोग को उसकी अभी जरूरत नहीं है. So we will just work with these two files only. The first one is settings and another one is URL. ये दो फाइल पे सबसे ज्यादा वर्क करने वाले. सेटिंग्स पूरे प्रोजेक्ट का सेटिंग्स मतलब उसके पास होगा, एंड URLs इन द सेंस जो भी URLs मुझे लाइव करने हैं, जो भी पेजेस मुझे लाइव करने हैं, I will just mention all these URLs over here. So now that's that. What we completed. Let's conclude that. So up to this मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलप करना सीखा. So how to develop the project? How to develop the project? So simply you have to just create a folder जहाँ पे आप अपना टोटल डिटेल्स रखना चाहते हो. I just create a folder that is Django project. मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया. Now inside this folder I want to create a website. So what I did, मैंने क्या काम काज किया, I just open the command prompt और मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे था, तो मैं वहां नेविगेट हुआ CD डेस्कटॉप एंड आफ्टर दैट CD Django प्रोजेक्ट. तो पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं पहुंचा. आफ्टर दैट मैंने कमांड फायर किया. दिस कमांड इज Django admin start project and whatever the project name, आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है, just specify that project name. So I just write down my site. I just mentioned my site. So Django admin starts project. And now अगर आप ये भूल चुके हैं कि start project था या start apps था, just write down Django admin. Okay, आप स्पेलिंग भूल चुके हैं, अदरवाइज कमांड का नाम ही भूल चुके हैं, तो सिर्फ इतना लिखिए, you will get all the command names which are actually like allowed to use with Django admin. So आपको सबके सब कमांड के नाम मिल जाएंगे. Just use either of the command. So I just use start project and this is my project name. अब उसके बाद प्रोजेक्ट का हायरार्की क्या था. अगर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, then I will just get a single folder that's a container of my project. Inside that I will have manage.py and a folder my site, that's my project name, and inside that I have 5 different files. Okay, so हमने इसको देखा, but right now it's not required. अभी मुझे कुछ देखना ही नहीं है इसके बारे में. Now the next thing is, so up to this I hope everything is fine. Now if your project is successfully created, now let me start the server and launch the project. Now what do you mean by server? Server in the sense, guys, मैंने वेबसाइट तो डेवलप कर ली. नाउ कंसीडर आई जस्ट डेवलप थ्रू द IMAX. मैंने वेबसाइट डेवलप कर ली. ओके, तो मैंने अपने कंप्यूटर में वेबसाइट डेवलप की. नाउ मैंने कंप्यूटर शट डाउन किया. नाउ कोई बंदा उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है. मैंने वेबसाइट डेवलप करके सेव कर दिया, बना दिया पूरा वेबसाइट डेवलप, अच्छा वेबसाइट डेवलप किया. नाउ कोई बंदा उसको एक्सेस कर सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अप टू दिस मैंने उसको अपलोड नहीं किया सर्वर पे. So we have to just like purchase a domain name. Domain name in the sense, this is the domain name, suryaimax.com. Okay, so this is the domain name. So first of all, you have to purchase the domain name, and after that you require some hosting space. Okay, तो आपको space purchase करनी है, उसके ऊपर आपको उसको launch कर देना है. तो एक बार आपने वेबसाइट को launch कर दिया, that means now like anyone can access that website. But जिस कंप्यूटर में आपने उसको launch किया, मतलब जिसने आपको space provide किया, उस बंदे के पास कोई तो जगह कंप्यूटर हो गई जिसमें उसने हार्ड डिस्क वगैरह खुद तो सेट कर रखा है, जिसने आपको स्पेस प्रोवाइड किया हुआ. ठीक है, अब वो कंप्यूटर 24/7 चालू होना चाहिए.
अगर वो बंदा अपना कंप्यूटर बंद कर देता है, हमने जिस वेबसाइट मतलब अपनी वेबसाइट जहां लॉन्च की और उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, देन गाइस आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसे कंप्यूटर में मतलब जैसे होस्टिंग लाइक जो भी स्पेस प्रोवाइडर है वो एक्चुअली कंप्यूटर बंद नहीं करते। ओके ठीक है, उनका 24/7 मतलब उसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर इन द सेंस इट्स अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर ऑन व्हिच योर वेबसाइट वाज एक्चुअली लॉन्च। बट राइट नाउ फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन में कोई स्पेस परचेस नहीं करने वाला, और आप भी घर पे कोई स्पेस परचेस नहीं करेंगे। ओके सो गाइस फॉर दैट हम लोग अपना लोकल सर्वर यूज करने वाले हैं। लोकल सर्वर इन द सेंस मुझे चेक तो करना है ना कि अगर मैं इस वेबसाइट को लॉन्च करूं तो कैसा दिखेगा ये वेबसाइट, इसमें कुछ एरर है कि नहीं। जैसे हम प्रोग्राम को रन करते थे पाइथन प्रोग्राम को, सो दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज अ वेबसाइट। सो आपको इसको ब्राउजर पे लॉन्च करना पड़ेगा, ब्राउजर पे एक्सेस करना पड़ेगा। So before that you have to just inform your computer, oh this is the server. So whenever you will just open the browser and make a request or try to open the website, वो कहीं ना कहीं launched होनी चाहिए। जैसे वो hosting space की बात की, in the same वो कहीं ना कहीं launch होनी चाहिए। So if you want to just launch the server, you have to write down this thing manage.py and run server. But ये command लिखने से पहले आपको actually what is this manage.py? It's actually a Python file. And where is it located? It is actually inside this my site folder. Okay, तो आपको पहले इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पहुंचना पड़ेगा। So let me just do one thing. हम लोग यहाँ लिखेंगे cd and whatever the project name you have. So cd my site. Now just write down manage.py and run server. Just check server is working or not. So guys यहाँ मैंने कमांड में लिखा था python manage.py and then run server. So it's up to you, आप python लिखे चाहे ना, it's not a big deal. ओके अब नॉर्मल आपको प्रोग्राम पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए अगर आपको पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए पाइथन कमांड की जरूरत पड़ रही है, इनशॉर्ट इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक ऑन योर कंप्यूटर सेटिंग। तो अगर पाइथन की जरूरत पड़ रही है, जस्ट राइट डाउन पाइथन manage.py and run server. And if you do not require that Python word, then directly you can just use manage.py and run server. Okay, now my server is actually successfully started. It just inform you, oh, that's started. Some warnings are there, just ignore that. ओके कुछ तो वार्निंग उसने दिया कि सर अभी तक आपने एडमिन या कुछ माइग्रेशन कुछ भी नहीं किया और आपने सर्वर स्टार्ट कर दिया, जस्ट इग्नोर दैट। ओके नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सर्वर? वो सर्वर का लोकेशन क्या है सर, व्हाट इज द आईपी एड्रेस? तो उसने मुझे बताया सर स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर विल बी लॉन्च्ड ऑन दिस। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट ओपन द न्यू टैब एंड आई हैव टू राइट डाउन 127.0.0.1 slash what is the name, sorry not the slash, actually colon 8000. So it's my server was started on this port. Okay, my server was started on this port, so it takes some time, and after that it just provide a rocket symbol. Okay, that means वो server start हो चुका है। Okay, so उसने मुझे बताया oh sir your server is actually started on this. So what you have to do, you have to just write out manage.py and run server. So this is the command to launch the server. Now finally कुछ warnings मुझे दिया था, उस warning के लिए भी उसने मुझे help provide किया था, but just ignore this right now. And after that it just उसने मुझे inform किया sir okay this is the Django version actually 3.0.4, and it just informed me one thing sir, just apply this command to start the server, otherwise to access the server. Or still it's working, just close this. Okay, so मैंने process close किया, now refresh that, still it's working, देखो ऊपर round घूम रहा है, just close this. Okay, so that's a bug, but just ignore that, it's not a big deal. So your Django is perfectly works. एक rocket symbol मुझे मिल रहा है, that means it's perfectly launched. My server is started actually. Now if you want to go through the documentation, आप यहाँ पे click करिए, it will just like launch the Django project.com websites, और यहाँ से आपको documentation मिल सकता है। Now just ignore that, हम लोग step by step learn कर ही रहे हैं। So now the next thing is like how to just start the development server. So let's verify the Django project works or not. So what we will do for that, just pass the command. This is the path जहां पे आपका सर्वर आप चेक कर सकते हो। तो Django development is perfectly work. Okay, now मुझे क्या करना था, what's my website name? My website name is actually my site. Just write down my site. It's working or not? Let me check. So पहले मैंने क्या लिखा था? Actually I write down 127.0.0.1 colon 8000 and after that slash my site. What about that my site? यहाँ जो मैं my site लिख रहा हूँ वो क्या है? ये अपने प्रोजेक्ट का नाम है। Okay, so my site by default अब कौन सी फाइल चेक करेगा? It will by default check this urls.py, और इसके अंदर जो भी URLs होंगे it will just display all this new. तो सर इतने URLs आप एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज आपने यही डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, अगर ये प्रॉपर्ली वर्क करता है तो मुझे यहाँ पे वेबसाइट में मिल जाना चाहिए। हम लोग को स्टार्टिंग में एक्चुअली Django में कुछ बग मिला था, आई हैव टू अपडेट एक्चुअली।
ओके, जस्ट इग्नोर दिस, वो वर्क करेगा, और नहीं करेगा तो वैसे भी हम लोग को प्रोजेक्ट नेक्स्ट सेशन में बनाना है. सो दैट्स दैट. नाउ गाइस, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पोर्ट नंबर, आपको ये पोर्ट नंबर पसंद नहीं आया, मुझे 8080 पे एक्चुअली मेरा दूसरा कोई प्रोसेस चल रहा था. So you want to launch your project, on some another website. I just press Control C to stop this one. Okay, मैंने Control C press किया. Now मुझे same command run करना है, but I want to launch my server on another port. Then just specify that port number after your command. Python manage.py run server and the port number. So it will be launched on that particular port. Okay, so देखो अभी port number change हो गया. So it's up to you. तो आपको कहाँ launch करना है. So now it generates the bug because हमने उसको internally बंद कर दिया था, मतलब. So now 127.0.0.1 colon 8080 and my site मैंने ऐसे ही मतलब अपना जो वेबसाइट था. And guys, it just sees one thing, sir, like homepage is not found, but you have this URL actually. Homepage is not found, but you have this URL. So in short, this URL in the sense, what is that? ये admin कहाँ से आया? तो आपको याद हो तो urls.py में /admin लिखा हुआ है, /admin लिखा हुआ है, तो आप ये एक पेज एक्सेस कर सकते हो. So if you want to access that page, just specify admin over here. It will just open the admin panel. Give some time. Okay, इसको भूल जाइए अभी. So now it will work. Okay, so actually server was successfully launched. In short, we can start development. So now finally, so like our application is successfully, our project is will successfully work. So project बनाना सीख गए, हम लोग सर्वर स्टार्ट करना सीख गए. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई वांट टू डेवलप 4 to 5 वेबसाइट्स or a single website. First of all, I want to create in my project. So if you want to create a website, just ignore this. अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करना है, then सबसे पहले जस्ट अपने सर्वर को बंद करिए. Okay, and just use this manage.py. I just told you this is the manager. कुछ भी काम काज करना हो तो ये मैनेजर है. So manage.py. Now start apps. But guys, ये कमांड कहाँ पे लिखना है? Inside your project folder. So my project folder is my site. I have to just write out manage.py and start apps. Once again, मैं ये कमांड भूल चुका. Then मुझे क्या करना है? अगर मैं ये कमांड भूल चुका, मुझे नहीं पता कि manage.py के साथ क्या लिखना है. Just write down manage.py. It will list out all this. It will list out all the available possible. It will list out all the possible commands with this manage.py. So I want to just use start app. So what I will write down, manage.py. Start app. And website का नाम आप क्या रखना चाहते हो? Like let I just write down like first application. Okay, that's my website name. So first application. Just write down manage.py, start app and first app. Okay, so ये मैंने कहाँ पे लिखा? So I have Django _ project. That's my root folder. Inside that my site, that's my project name. Inside that, यहाँ पे दो चीजें already थी, my site and manage.py. Two more things was developed. First app and db.sqlite3. I told you guys by default कि SQLite चीज हम लोग को सपोर्ट करता है. ओके, तो जैसे आपने वेबसाइट बनाई, उसने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया. एंड कौन सी चीज के साथ कॉन्फ़िगर किया? SQLite. ओके, SQLite. If you want to work with the MySQL or if you want to work with the Oracle, so manually आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. बाय डिफॉल्ट वो SQLite के साथ काम कर रहा है. सो देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या क्या चीजें बन रही है. हो सर काफी सारी फाइल्स है इसके अंदर भी. सो इनसाइड माइग्रेशन folder is there and some six different files are there. So guys, if you want to develop your application, creating an app, you have to just run manage.start app and whatever the application is. जैसा हमारे एग्जांपल में फर्स्ट ऐप लिखा था, पाइथन लिखने की जरूरत नहीं, as I told you. So it will create some folders. It will create some files. So let's just start this. 1 minute. और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ. Okay, 6 different files it will create: init, admin, apps, model, test, and view. Okay, inside your application, inside your whatever the application name you choose, and one more folder inside that. That's a migration. Or inside the migration, one more file will be there, and that is init.py. So that's that. Okay, so मैं आगे नहीं बढ़ रहा actually because यहाँ तक भी अगर आपका हो जाता है, then in the next lecture we will start development the application. Okay, तो अपना application तो बन चुका, but after that मुझे उसमें से कोई actually view develop करना है. मतलब जैसे आप यहाँ पे request place करो, आपको मैसेज आना चाहिए, hello world, welcome to my first Django web application. Okay, ऐसा कुछ मुझे मैसेज चाहिए, but not right now. In this session में यहाँ